अब यूपीएससी हमसे 2024 में पूछता है, क्या पूछता है? विद डिफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडिया विद इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसने हमसे पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिजिकल कैपिटल के बारे में पूछा है, फिजिकल कैपिटल के बारे में पूछा है, इंडियन इकोनॉमी और फिजिकल कैपिटल के बारे में पूछा है, और ये पूछा है कि ना, देखो, अगर ये इसने हमसे टेंजेबल टेंजेबल वेल्थ के बारे में पूछा है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसने हमसे टेंजेबल वेल्थ के बारे में पूछा है ना। अब टेंजेबल वेल्थ में भी टेंजेबल वेल्थ भी डिवाइड है ना, कि वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल के बारे में। और इसने बोला यार कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। और लोग बोलते हैं पेपर मुश्किल है, पेपर मुश्किल है। कितना प्यारा, कितना आसान क्वेश्चन है। फार्मर प्लग, किसान का हाल, नहीं वर्किंग कैपिटल जैसे खत्म हो जाता है क्या हल। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल ठीक है। यान फॉर वीवर, जो यान होता है, क्या बोलते हैं, सूत, वो क्या बुनकर का फिक्स कैपिटल है, नहीं खत्म हो जाता है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है। दो ठीक है और दो गलत है। हाँ जी, ठीक है। अब एक इन्होंने हमसे क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर और कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। Acquiring new technology is a capital investment. Debt financing is considered a capital expenditure, while equity financing is a revenue expenditure. इसका आंसर क्या है? बी, ओनली टू। Acquiring a new technology is a capital expenditure. क्या ये सही है या गलत है? ठीक है। Debt financing is considered a capital expenditure, while equity financing considered a revenue expenditure. क्या ये सही है या गलत है? डेप्थ फाइनेंसिंग क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है?
एक बात बताओ, डेप्थ फाइनेंसिंग तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे ना तो कंपनी की संपत्ति कम होती है। ठीक है, आंसर ये ये ऊपर गलत लिख सकता है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म इन process which enable individual of a company to accumulate more capital। ये मुझे पता है, इंटेंजिबल नॉलेज 50 बार कर लिया। अंडर किसान क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म बोल रहा है। यार ये इस तरीके से जो मैं क्वेश्चन अब जो मैं करूंगा ना, क्वेश्चन करूंगा, यही मैं सीख रहा हूँ इस पुस्तक से। नॉलेज तो आ रही है, नॉलेज आ रही है, पर क्वेश्चन जो करने का तरीका है ना, ऑप्शन पढ़ना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब मुझे नहीं भी आता वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन फार्म एसिड, ठीक है। परचेज कंबाइन हार्वेस्टर, अब यार ये इतना महंगा आएगा कंबाइन हार्वेस्टर। कंजम्पशन ये ठीक है, प्राइवेट पोस्ट प्राइवेट हार्वेस्ट ठीक है, पोस्ट ठीक है। अगर आप दो को निकाल दो तो एक तीन चार कंस्ट्रक्शन असेंबली हाउस सेटिंग मतलब कोल्ड स्टोरेज, ये मतलब थोड़ी है कोल्ड स्टोरेज का। एक तीन चार ये ठीक है, ये सही है। दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व यूजिंग लॉजिक एंड etymology। Fixed capital means something that is permanent, while working capital means something that is temporary. Items like plug and computer are more permanent and long lasting than raw material, and energy resource like yarn, petrol, which are used or replaced on daily weekly basis during production। A plug is a durable tool, ये तो पता ही है, ये तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन ठीक है, used over many production cycle, it fixed capital, it is a fixed capital, not working capital। A computer is a durable item used repeatedly in production, correctly classified as a fixed capital। Yarn is a raw material that gets used up during production। Yarn is a raw material that gets used during production। Petrol consumed during production process। Yarn is a raw material that मुझे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ठीक है। पालन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, एम टू एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। प्रोडक्शन रिक्वायर planned combination of multiple inputs referred to as the organization of production ठीक है। core essential mineral labor referred to human effort। In land labor physical capital divided into subtype fixed capital working capital ये ठीक है। clay for cotton yarn for weaver cash for buying inputs कैसे कंप्यूटर पे लग ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व नॉलेज skill entrepreneurship ability required to organize land labor and physical capital
convert into output through decision making and innovation. Key concept: fixed versus working capital. Fixed versus working capital. Fixed capital used for many years, not consumed during production. Used during single, देखो सर ने बताया था ना GFCF, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जितना होगा, जिसमें कौन कौन से आते थे, उसमें आता था बायोलॉजिकल वो, मकान आते थे, है ना, और डिफेंस आते थे, मशीनरी आती थी, और एक चीज और आती थी, और आईपी। ये पांच आते थे GFCF, जिसका फिक्स कैपिटल GFCF जितना ज्यादा होगा उतना उसका भला होगा। Who organize production? The role of producer or entrepreneur is central. The person from combine all input, manage day-to-day activities, bear risk, and sell the output. Without an organizing mind, land, labor, capital are not produce anything. Constraint on production. देखते हैं देखते हैं प्रोडक्शन के सामने कौन कौन से खतरे हैं। लैंड इज फिक्स, कैपिटल इज स्क्वायर, बोरोइंग कैपिटल एट हाई इंटरेस्ट रेट is a key barrier. Labor is abundant, but employment opportunity are limited. Labor बहुत ज़्यादा है, leading to low wage. Modern versus traditional production organization. Traditional system based on manual labor, small tool and family-based decision. Modern production use advanced technology, machine, formal finance, and large-scale input. Example: MNC divide production across countries based on input cost, market proximity, and technology availability. Additional concepts from NCRT. Production function describe the maximum output achievable from given input combination. Production function. Efficiency matter, proper combination of input give a higher input. Misuse reduce efficiency. ये दो चीजें देखता हूँ मैं, वो चीजें का मतलब देखते हैं। फिर प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब द मैक्सिमम आउटपुट अचीवेबल फ्रॉम इनपुट कॉम्बिनेशन। मीनिंग इन हिंदी, और इसे हिंदी भाषा में समझाओ। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में सुन लो। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दिखाता है कि कितने इनपुट जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल का कंबाइन करके हम कितना आउटपुट यानी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें फोकस होता है कि मैक्सिमम आउटपुट अचीवेबल। ये आपने मुझे 5 घंटे दे दिए, मैं 5 घंटे में कितना, एक आसान शब्दों में समझाएं, जब कोई चीज़ या सर्विस या चीज़ या सर्विस बनाते हैं तो हमें अलग अलग सोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे लोग, लेबर, रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन फंक्शन का ये ये बताना है कि हम कितना मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितना सेम इनपुट से हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का बताना है। एफिशिएंसी मेथड। Efficiency matter, proper combination of inputs give a higher output. Misuse reduce efficiency, meaning in हिंदी, इंग्लिश भाषा में समझाओ। एफिशिएंसी का मतलब है संपूर्ण और सही तरीके से काम करना। इसमें रिसोर्स का बेस्ट बेस्ट यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा आउटपुट काम गया। मीन्स अगर इनपुट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन किया जाए तो ज़्यादा आउटपुट और एफिशिएंसी बढ़ती है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन और इनपुट का मतलब है जब हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हम ज़्यादा और अच्छा
आउटपुट पाते हैं। मतलब अगर अगर इनपुट का सही जगह और सही मात्रा में इस्तेमाल हो तो हम अपने प्रोडक्शन को मैक्स कर सकते हैं। मिसयूज गलत मिसयूज करने गलत तरीके से इस्तेमाल करने से एफिशिएंसी कम हो सकती है। अगर रिसोर्स को गलत कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए, जैसे कि ज़्यादा लेबर हो, मशीन कम हो, तो प्रोडक्शन प्रोसेस इनएफिशिएंट हो सकती है और आउटपुट कम हो सकता है। अगर एक फैक्ट्री में 10 वर्कर और 5 मशीन है, तो अगर मशीन सही तरीके से यूज ना हो और ज़्यादा लेबर लगा दिया जाए तो एफिशिएंसी कम हो सकती है। लेकिन अगर मशीन और वर्कर का बैलेंस सही हो तो मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। कंक्लूजन, एफिशिएंसी तब तक होती है जब जब इनपुट का सही कॉम्बिनेशन हो, यूज करके हम ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं। अगर अगर इनपुट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। कांस्टेंट रिटर्न टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एग्जांपल डबलिंग इनपुट डबल आउटपुट। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एग्जांपल डबलिंग इनपुट डबल आउटपुट। मीनिंग इन हिंदी और इंग्लिश भाषा में समझाओ। कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल का मतलब है जब हम अपने इनपुट को डबल करते हैं तो आउटपुट भी दोगुना हो जाता है, यानी आउटपुट कोई चेंज नहीं होता, यानी हाँ ठीक है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ठीक है। रिटर्न ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग आउटपुट डबल इनपुट, इंक्रीज आउटपुट लेस देन डबल। ठीक है, थैंक यू। रियल एग्जांपल फ्रॉम पालनपुर, टूल प्लस टूल प्लस टूल प्लस सर जी क्या कर रहे हो जी? लैंड यूज टू स्मॉल फार्मर बोरो, वर्किंग कैपिटल हाई इंटरेस्ट फार्मर हाउ टू लिमिटेड लैंड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वर्सेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्सेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हिंदी में समझाओ और इंग्लिश भाषा में बता। मैं समझाओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और लॉ ऑफ यूटिलिटी दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों ही डिमिनिशिंग यानी कम। यार ये अपने आप ही नीचे क्यों हो जाता है क्या? अलग, लेकिन दोनों ही डिमिनिशिंग यानी कमी होती है, क्योंकि कमी होती हुई चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों में हिंदी और इंग्लिश में इन दोनों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। हिंदी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility, law of diminishing marginal utility applied to consumer. Marginal return margin law of sorry diminishing marginal utility applied to consumer. Diminishing return applied to producer. Law of diminishing marginal utility, when a consumer keeps consuming more units of the same good, the excess satisfaction of each good decreasing. Total satisfaction total satisfaction makes increase but a decreasing rate. Example, first mango gives 100 units, second page is cheaper. Why demand curve slope downward? As satisfaction decrease, consumers are willing to pay less for additional units. Law of diminishing return. When a producer uses more one input like labor while keeping other land or machine fixed, ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ तक। यहाँ तक बहुत ईजी है, मजा आ रहा है पढ़ने में।
का मतलब है जब आप किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल एडिशनल यानी हर एडिशनल यूनिट का सेटिस्फेक्शन या उपयोग कम होता है। एग्जाम्पल मान लो आप एक चॉकलेट, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, पहली चॉकलेट खाने पर आपको बहुत मजा आता है, लेकिन दूसरी चॉकलेट खाएंगे तो उसका मजा थोड़ा कम लगेगा। तीसरी चॉकलेट खाने पर और भी कम मजा आएगा। इसका मतलब हर एडिशनल यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। इंग्लिश में मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब हम एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं तो हर बार एडिशनल यूनिट में जो मजा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम हो जाता है। जैसे चॉकलेट खाने पर पहली बार बहुत बहुत मजा आता है, लेकिन दूसरी बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हिंदी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है जब आप अपने इनपुट जैसे लेबर या कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आउटपुट का रेट कम हो जाता है। मतलब जब आप ज़्यादा लेबर या रिसोर्स डालोगे तो एक पॉइंट के बाद वो रिसर्च उतना इफेक्टिव या इनपुट नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल मान लो एक फैक्ट्री में, अच्छा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट रिटर्न ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो समझ में आ गया, चलिए तो यूटिलिटी समझ में आ गया। मान लो एक फैक्ट्री में 5 वर्कर हैं और 10 मशीनें हैं। अगर आप एक और वर्कर ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप 10 वर्कर डालोगे तो हर वर्कर की कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, टोटल आउटपुट इंक्रीज कम हो जाएगा, यानी एक पॉइंट के बाद एडिशनल वर्कर प्रोडक्शन उतना इंप्रूव नहीं करेंगे। इंग्लिश में जब कुछ 5 कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है दूसरा हाइडिशन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन अ प्रोड्यूसर यूज वन मोर इनपुट लाइक लेबर व्हाइल द अदर मशीन असिस्ट। मार्जिनल यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत बहुत benefit from the particular solution of production information concerning production first and diminishing return and production stage. In short run, when some unit are fixed, production has three stages. Stage 1 increase return, output increase fast. Stage 2 diminishing return, output rise slowly. Stage 3 negative return, output starts falling. Firm usually operate in stage 2 where extra output is positive but falling. इसको इंग्लिश भाषा में समझाओ। डिमिनिशिंग रिटर्न और शॉर्ट रन प्रोडक्शन स्टेज को हम इंग्लिश में समझाते हैं। शॉर्ट रन जब कुछ यूनिट फिक्स होते हैं जैसे मशीन, और कुछ यूनिट हम चेंज करते हैं जैसे वर्कर। प्रोडक्शन के तीन स्टेज होते हैं। स्टेज वन में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न, आउटपुट इंक्रीज फास्ट। स्टेज वन में आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ता है जब एक एक लेबर या एक रिसोर्स ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन फास्ट इंक्रीज होता है। मान लो अगर आप एक और वर्कर ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए स्टेज रिटर्न कहते हैं। स्टेज टू, इस स्टेज में आउटपुट तो बढ़ता है लेकिन स्लोली, डिमिनिशिंग रिटर्न।
है ना। मतलब जब एक ऐसा लेवल करते हैं आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट का इंक्रीज कम हो जाता है लेकिन स्टिल पॉजिटिव होता है। ये स्टेज यूजुअली ऑपरेट करते हैं जब हम बिजनेस को चलाते हैं, जहाँ पर एक ऐसा आउटपुट पॉजिटिव है लेकिन कम हो रहा है नेगेटिव, इस स्टेज में आउटपुट आउटपुट गिरने लगता है। आउटपुट फास्ट बढ़ता है, रिटर्न इंक्रीज इन रिटर्न। आउटपुट स्लो बढ़ता है, डिमिनिश इन रिटर्न। चलिए काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू। इन वन लाइन each for each MCQ, one line for one line for each MCQ. More will consume less extra satisfaction user. More input you add with other fixed, less extra output you get. And you consumer logic and C producer logic. And you explain demand and he explain marginal production, marginal production. MU is objective, it is objective. Elasticity of demand, price, income, and growth. What is elasticity of demand? Elasticity of demand tells us how much quantity demand change when increase in price, the good itself, the income of consumer of the good itself, and the price of related goods. It shows the degree of responsiveness of buyer. Plastic elasticity of demand (PED). If it tells us how much demand change when price of goods change. If small if a small change in the price cause of big change in demand is elastic. If a small change in price cause a big change in demand is elastic. ठीक है। इस इलास्टिक वजह से होता है price of elasticity, price of elasticity, price perception, demand doesn't. Type of price elasticity. Perfectly inelastic. Demand does not change at all if price changes. Yeah, perfectly demand does not change at all if price does not change.
इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड चेंज अ लिटिल व्हेन प्राइस चेंज। इसे समझाना हिंदी में। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है। इलास्टिक डिमांड, डिमांड चेंज मोर देन प्राइस। परफेक्ट इलास्टिक, इस टाइम प्राइस चेंज और डिमांड चेंज। ठीक है। सिंपल सी है ना, समझ करेंगे अपना। बात इफेक्ट प्राइस, बात इफेक्ट कहाँ जाते हैं, बात इफेक्ट प्राइस इलास्टिक, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, more substitute, more elastic, nature of good necessity, ठीक है, proportion of income spent large scale, more elastic, time period over time people agree, more elastic, ठीक है, income elasticity, how much demand change in consumer income change, if demand increase with income, so the good demand increase with income, the good is normal, the good is normal good, if demand increase slowly, it's necessity, if demand increase it's luxury, if demand decreasing, the rising income, the good is inferior. If demand increase slowly, income necessity is quickly luxury, decrease inferior good. A fifth example of fourth grade society is cross elasticity of demand. Tell how much demand of one good change and price of another good change. Both good are substitute like tea coffee. Demand rise of one demand, the other price rises. If both good are complement each other, if both good are conservative, stop and rise. Demand remain unchanged. ठीक है। Elasticity and total expenditure. If price change, what happens to total spending depend on elasticity. If demand is elastic, price fall, increase total spending. If demand inelastic, price fall, reduce total spending. If demand is unitary, elastic, total spending stay at same. समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो वही कर रहे हैं। If demand is elastic, price fall, increase total spending. If demand is inelastic, price fall, reduce total spending. If demand is unitary, elastic, total spending stay the same. So, टोटल स्पेंडिंग और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप है। अगर जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस वजह से टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाता है। या therefore प्राइस कम, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो टोटल पैसा ज़्यादा मिलता है। प्राइस कम और डिमांड तो टोटल पैसा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि प्राइस 100 से 90 हुई और लोगों ने डबल खरीद लिया, पैसे ज़्यादा मिलेगा सही बात है। अगर अगर एक चीज़ लगता है इलास्टिक और डिमांड
इलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम होगा इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम होगा पैसा ज़्यादा बढ़ेगा इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम होगा पैसा पैसा घटेगा डिमांड ज़्यादा डिमांड में यूनिटरी इलास्टिक में चेंज प्राइस चेंज से टोटल पैसा सेम रहेगा अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक में है जब प्राइस गिरता है या बढ़ता है डिमांड उसकी अगर 10 रुपये गिरा तो डिमांड 10 पैसा उतना ही नहीं प्राइस और डिमांड इफेक्ट बैलेंस होता है टोटल पैसा सेम होता है यूनिटरी इलास्टिक में ठीक है अगर डिमांड इलास्टिक जब प्राइस गिरता है डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है तो प्राइस कम लेकिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा लेकिन पैसा लेकिन प्रॉफिट कम हुआ लेकिन लोगों ने बस थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल खरीदा ठीक है समरी प्राइस इलास्टिसिटी on price change sell sensitivity like velocity on price change sell sensitivity or buyer plastic income elasticity income change and how good normal how is good is normal or inferior gross elasticity price of the goods so substitute or complement all three help economics and policy makers and how consumers respond to change in the economy a perfect competition monopoly and competition in oligopoly perfect combination large number of buyers sell or homogeneous product identical across all firms, free and two free also. Price taker, no individual firm can influence market price, perfect knowledge of price and technology, buyer both seller behavior, some sell from any quantity and market price, no need to reduce price to sell more, no need to reduce price to sell more. Non-zone zero economic profit duty, thank you for entering the fund. Supply decision made by their price, monopoly, single sell of commodities, low substitute level, entry completely blocked, legal technological based barrier, price, firm, firm price maker, not price taker, face the entire market demand, so sell more, the plan must reduce price, output decision where MC, MR equal to NC, both 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 short and long positive economic process, consumer and with less quantity at high price than perfect competition. Efficiency loss occurs due to underproduction at higher price, monopolistic competition, large number of firms like perfect competition, entry, pre-entry exit, but products are differentiated by brand quality and feature packaging. Each firm has some control over price due to brand loyalty, behavior. Firm faces negative slope, demand curve not perfectly elastic, produce less than perfectly competition and change over. In short run, positive profit possible, long run zero economic profit due to entry, new firm, concept, insight, differentiation, create monopoly element while number of firms ensure competitive pressure, common in real world market like biscuit, shop and food. Oligopoly, few large firms dominate the market. Products may be homogeneous, still cement and differentiate or the star mobile. High entry barrier investment, brand loyalty and pattern. Each firm decision affects other mutual interdependent behavior, strategic thinking. Firms react what they expect reliable do may lead to price rigidity. If one firm raises price, other and other do not look and firm demand fall. If firm search therefore gaining their market share. Conclusion in cartel like behavior is possible. Their firm acts like a monopoly, typical case, duopoly, two firms exist, specificity in data, conceptual insight on conceptual insight on competition versus behavior, imperfect competitive market structure is more competitive, but some does not completely active or no price control, imperfect market like
Oligopoly and monopolistic competition firms completely seriously using price, branding, advertising, ज़्यादा हो रहा है, branding, advertising, so competitive speaker, structure and competitive behavior. Perfect, perfect competition. Many firms, identity product, price takers, monopoly. One firm, no substitute, price maker, high price, low output, monopolistic competition. Many firms differentiate product, some price control, ठीक है, stock and flow, ये question की सकता है, उसके बाद जो बताइए, और बताइए, ठीक है, float, stock and flow variable. Stock variable measured at particular point in time represents a quantity that exists at a point of time. Capital, wealth, inventories, money supply, foreign exchange reserve, stock variable are defined at a point of time. Wealth, capital, industries, and stock variable, flow variable measured over a time represents rate of change. Income, expenditure, saving, investment, GDP. Flow variable are defined per unit of time. Income, saving, expenditure. UTC flow variable. Interpretation of UPSC question. Which of the following include income of a company, flow, saving of a company, flow, inventory of a company, stock. Some basic concepts of macroeconomics. Economic territory. Economic territory includes political frontier of a country, including airspace and territorial water. Embassies, consulate, and military base located abroad. Ship aircraft operated by residents across the world. Key point is referred to geographical boundaries where country economic law applies. Normal resident, a person or institution is normal resident of a country. They normally reside in a country and diplomats and employees of international organizations factoring in income versus transfer income tax and by providing sectors of production include national income, example wage, labor, salary, transfer income, unilateral payment without any service in return, exclude from national income, old age pension, for employment allowance, gift, donation, final good versus intermediate good, good, final good versus intermediate good. Final goods. Goods are used for final consumption or investment, not for resale or further production, include national income. Intermediate goods are inputs in production of other goods, not counted separately in national income to avoid double counting. National income accounting. Circular income. Circular flow of income. Two-sector model. The economic consists household or firm. Household provides sector of production and receives income. Firm produce good and service and receive consumption expenditure. अरे वाह! This continuous exchange of money and resources forms circular flow of economy. Key idea: expenditure by one unit become income of another. Thus, every transaction involves giving and receiving. National income aggregate (GDP) total value of final good and service produced within domestic territories of a country in a 1 year. ठीक है, national income aggregate GDP, GNP, GDP full GDP plus net factor and resident income by resident. GDP net domestic product
minus GDP minus depreciation. Net national product. GDP, GNP minus net minus depreciation. National income refer to NNP at sector cost. This is the most accurate measure of income earned by residents from all economic activities. ठीक है. Conceptual distinction. Gross versus net. Gross include depreciation, net is excluded. Domestic versus national. Domestic includes production within country. Within country territory, national includes income earned by residents, even and from market price. Market price include indirect tax and exclude subsidies. Sector cost, market sector cost exclude indirect tax, exclude subsidies. To convert market price to sector cost, market price minus indirect tax plus subsidies. Net sector earned from abroad. Income earned by residents from abroad minus income non-residents earned minus income paid to non-residents. It includes wages and salary earned abroad, interest, rent, and profit received from abroad, re- retained earnings for of resident companies from overseas operations. It added domestic do- income to get national income. Like three methods to calculating national income. Value added of production method and value added by each production unit. Value added by each production unit. Value added is equal to value of output minus value of intermediate good. Only final goods are counted to avoid double counting method. Precaution: do not include transfer payment. Do not count intermediate goods. Include input inputted inputted level like owner occupied housing. Income method: add all income earned by factor of production. Wages and salary, interest, salary, rent, profit, including dividend and retained earnings. Precaution: do not include transfer of income like pension, exclude windfall gain like lottery, do not include sale expenditure method. Add final expenditure on good and service by household. Firm and government component include private consumption expenditure, government consumption expenditure, investment, gross capital formation, net export. Precaution: do not include second-hand good. Do not exclude transfer payment. Include input value, sell, consume output. Related income concept. Private income, personal income, private income minus corporate tax but retained earning. Personal disposal income is a GDP minus nominal GDP divided real GDP into 100. So, price level. Inflation method.